Hello friends, good morning and welcome to my YouTube channel. My name is Chitra Varun and I am here discussing a series of 1300 previous year questions of biology from different exams like SSC-CGL, CHSL, Audit Section Officer, CPO, FCI, SI or Delhi Police. So this is our day 9 class. So let's begin friends. These are my credentials. Question number 201. A substance that stimulates the production of antibodies when introduced into a living organism is known as carcinogens, androgens, antigens, estrogens. So answer C is correct. Antigens are those substance or foreign particle that stimulates the production of our antibodies or immune system when they introduce into a living organism. And they could be of any type. Antigen can be of any type like toxins, bacteria, virus, foreign blood cells and cells of the transplanted organs. So antigen can react with our immune system to produce the or to stimulates the production of antibodies. So answer C is correct. Antigens are those substance or foreign particle that if when they are introduced in our body, they induce the stimulation of antibody productions. So answer C is correct. If we talk about carcinogens, carcinogens are those substance or rays or any compound that induce the production of number of cells or they causes the cancer inside our body. So carcinogens are those chemical substances or rays that induce the cancer in our body. And if we talk about androgens, then androgen is a male hormone. If we talk about estrogen, estrogen is a female hormone. Now question number 2. Darwin finches refers to a group of fishes, lizard, birds, amphibian. So answer C is correct, birds. Darwin finches are a group of about 15 species of passerine birds and they were first collected by the Charles Darwin. That's why they are known as Darwin finches, or they were first collected from the Galapagos Island. So answer C is correct. Birds are a group of small birds. It is a group of small birds that is known as Darwin finches. Now question number 203. The tissue in man where no cell division occur after birth. Skeleton, nerves, connective, germinal. So answer B is correct. Nerve cells are those cells they never divide or increase in number after you are born. If they are damaged, then they also are not replaced. So they remain for the lifetime. They remain as it is for the lifetime. So nerve cells are those cells that never divides after birth. Question number 204. The source of oxygen generated during photosynthesis is water, carbon dioxide, chlorophyll, mesophyll cells. So answer A is correct. Oxygen is generated during photosynthesis is from water. Photosynthesis में क्या होता है? Photosynthesis में carbon dioxide एंड वाटर यूज होता है एंड दे रिलीज ऑक्सीजन एज ए बायो प्रोडक्ट. और मेन प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है. सो द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज ए बायो प्रोडक्ट इन photosynthesis process. The main product of photosynthesis is carbohydrate, that is our glucose. Now question number 205. Which of the following element is associated with teeth disorder? Chlorine, fluorine, bromine, iodine. So fluorine is the element that is associated with the teeth disorder because the presence of sodium fluoride in drinking water at the level of 2 ppm may cause mottled and enamel in teeth. ये enamel की layer को हमारी teeth में जो enamel layer होती है it become mottled, and if its presence if fluorine is deficient in water then it may cause the tooth decay or breakdown of dental tissues. So इसकी कमी से भी tooth decay हो जाता है. So this is associated, fluorine is associated with our teeth disorder. So answer B is correct.
Now question number 206. Which of the following is an abnormal constituent of urine? क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज क्या होते हैं? कीटोन बॉडीज आर द वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी इन द लिवर। जब हमारी बॉडी के अंदर फास्टिंग वाली सिचुएशन बोल सकते हैं, या व्हेन वी टेक लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट और वी आर स्टार्व, जब हम स्टारवेशन की कंडीशन में होती हैं, हम फास्टिंग पे होते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, देन व्हाट बॉडी डू, जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं लिवर में, दे आर ब्रोकन डाउन फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए दे ब्रेक डाउन। एंड व्हाट हैपन, जब वो टूटते हैं तो कीटोन बॉडी एज ए बायो प्रोडक्ट निकलता है। और ये कीटोन बॉडी दो तो यूज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, एंड थर्ड वन इज released into the urine as a waste product. It is excreted into the urine. When the rate of synthesis of ketone body exceeds the rate of utilization, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोनीमिया, उसमें कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। सो आंसर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 207. Which one of the following cell produces antibodies? इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में वो लिम्फोसाइट्स की वजह से होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स एंड दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज बी सेल टाइप एंड अदर वन इज टी सेल टाइप। जो बी सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड टी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। So answer D is correct. Lymphocyte or B cell produces antibodies. Question number 208. The vitamin which helps in clotting of blood is A. Vitamin A, B. Vitamin D, C. Vitamin B and D. Vitamin K. तो फ्रेंड्स जो विटामिन के होता है दैट इज़ वेरी नेसेसरी पार्टिसिपेंट इन द सिंथेसिस ऑफ सेवरल प्रोटीन्स दैट मीडिएट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दैट मीन जो विटामिन के है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉट। सो आंसर डी इज करेक्ट। विटामिन के इज हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नाउ क्वेश्चन नंबर 209. At very high altitude, the RBC or red blood corpuscles in human body will increase in size, decrease in size, increase in number, decrease in number. So answer C is correct. What happened at very high altitude? There are fewer oxygen molecules per volume of air. अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड्स पे तो ऑक्सीजन की वहाँ कमी होती है। टू कंपनसेट फॉर द डिक्रीज इन ऑक्सीजन, वन ऑफ द बॉडीज हार्मोन, जो हार्मोन होते हैं हमारे अंदर, इरिथ्रोपायटिन एक हार्मोन होता है दैट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ मोर आरबीसी टू एड इन ऑक्सीजन डिलीवरीज टू द मसल्स। जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। हमारे पास जितने अमाउंट ऑफ आरबीसी हैं वो कम पड़ जाते हैं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इफ़ देयर इज लेस ऑक्सीजन देन वी रिक्वायर मोर आरबीसी टू कंपनसेट द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द बॉडी। सो देयर विल बी ए हार्मोन, तो वो क्या करता है, वो हार्मोन दैट इंक्रीजेज और स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ आरबीसीज। वो क्या करता है, स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को बढ़ा देता है। आरबीसी जितनी होंगी उससे ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई आवर चीक्स बिकम्स रेड एट हाई एल्टीट्यूड। हमारे क्या चीक्स कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, बिकॉज आरबीसी नंबर हमारे बढ़ जाते हैं एट हाई एल्टीट्यूड पे। सो आंसर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 210. ए टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। फ्रेंड्स टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दैट मीन फर्टिलाइजेशन जो होता है इन विट्रो होगा। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आईवीएफ जो होता है इन विट्रो होता है। इन विट्रो मीन्स टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है और लैब में होता है, इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और पर्टिकुलर कंडीशंस में होता है। उसमें एग्स एंड स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी से रिमूव किए जाते हैं एंड दे
आर फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, मीन्स लैब में वो फर्टिलाइज किए जाते हैं, एंड देन दे आर, जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, ब्लास्टूला बन जाता है 3 days और 5 days पे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं विमेन यूट्रस के अंदर. सो आंसर डी इज करेक्ट हेयर. फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस. टेस्ट ट्यूब का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो आंसर डी इज करेक्ट हेयर. Question number 211. Clove, the commonly used spice, is obtained from the fruit, stem, root, flower, bud. So answer D is correct. Clove are the aromatic dried flower bud of a tree. ये जो होता है क्लोव हमारा होता है, ये फ्लावर बर्ड्स होता है, एंड दैट इज यूज एज ए कॉन्डिमेंट इन इंडियन करीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 212. What are the blood corpuscles that helps to build up resistance against disease? A. Leukocyte, B. Monocyte, C. Neutrophils, D. Lymphocyte. So answer A is correct. White blood cells, also known as leukocytes, these are the cells of the immune system that are involved in the protection of the body against infectious disease and foreign invader. So this helps to build up resistance against bacteria or disease or virus. So answer A is correct. Leukocytes are the white blood cell that helps to build up resistance against disease. Answer A is correct. Now question number 213. Which is the gland that holds the body's thermostat? Option A pineal, B pituitary, C thyroid, D hypothalamus. तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस होता है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, and it play a crucial role in regulating our body temperature. So it acts as a thermostat center because the body keeps its core temperature constant at about 37 degree by this hypothalamus only. So answer D is correct. Hypothalamus is a thermostat center that regulate our body temperature. Now question number 214. What are the chromosome number in a human ovum? देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस में देखिए, इफ़ यू सी A is 24, B is 46, C is 48 and D is none of these. So answer B is correct. Why B is correct? Because human ovum actually is a haploid. Human ovum is a gamete. अगर हम बात करते हैं ovum की, then it is a gamete. And gamete should have haploid set of number. So here ऑप्शन में 23 होना चाहिए, मीन्स 23 would be correct answer, but there is no option of 23, so we will tick on 46. If we talk about zygote, human zygote, that mean the human ovum and sperm fertilized to form zygote. तो zygote के अंदर होंगे 46 number of chromosome. And here the question में क्या पूछा है? They are asking about human ovum. ओवम जो है हमारा वो गैमेट है, एंड इफ वी टॉक अबाउट सेम लाइक स्पर्म्स देन इट इज ऑल्सो ए गैमेट. दे वुड हैव 23 क्रोमोसोम होंगे इनमें, क्योंकि दे हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ नंबर. सो आंसर 23 इज करेक्ट, बट देयर इज नो ऑप्शन. अगेन आई एम सेइंग, सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन बी 46. Now question number 215. Hashish is obtained from plant. From which part of plant it is obtained? A. leaves, B. stem, C. exudate from leaves and female inflorescence, exudate from stem and male inflorescence. So answer C is correct. It is exudate from leaves and female inflorescence. So hashish क्या है actually? Hash is a, इसे hash भी बोलते हैं, and this is a drug that is made from cannabis plant. So cannabis sativa से ये obtain होता है, and this is mainly exudate from the leaves and female inflorescence. So answer C is correct. Now question number 216. Which organ of the body never rests?
A. Eyes, B. Pancreas, C. Liver, D. Heart. So answer D is correct. Heart is the only organ in our body which never rests throughout the entire life. The heart is a hollow muscle that pumps blood throughout the blood vessels by repeated rhythmic contractions. So answer D is correct. Heart is an organ that never rests. Now question number 217. In which part of the eye lies the pigment that decide the color of the eye of a person? A. Cornea, B. choroid, C. iris, D. vitreous body. So answer C is correct. Iris is responsible for the color of the eye. The iris is a thin circular structure in the eye that is responsible for the controlling the diameter and size of the pupil and thus the amount of light reaching the retina. And this colored part of the eye is iris, and this iris has pigmentation that determines the eye color. So answer C is correct. Iris is responsible for the color of the eye. Now question number 218. Which organ of the body never rests? So friends, it came in first sitting before we have saw this question before 2 slides, and now it is come again. So it was in second sitting of 2003. It is a very important question. Which organ of the body never rests? Muscles, nerve, tongue, heart. So answer D is correct. I have already explained about this. Heart is the organ that never rests throughout our life. Now question number 219. The presence of what distinguishes a plant cell from an animal cell? A. Chloroplast, B. Cell wall, C. Cell membrane, and D. Nucleus. So answer A is correct. Chloroplast, which is found in the plant cell only, and they doesn't found in animal cell. If we talk about the cell wall, then cell wall is also not present in animal cell. So both are correct, A and B. Chloroplast and cell wall present only in plant cell, and it is not present in animal cell. So answer A, B both are correct. Now question number 220. Which of the following is most important for growth of children up to age of 14? So friends, proteins are very important for the children's as they help their body grow. क्योंकि प्रोटीन जो होता है एज ए सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होता है एंड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ चाइल्ड बॉडी. सो अमीनो एसिड क्या करता है? दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, स्किन एंड वेरियस ऑर्गन इन चिल्ड्रन. दैट्स व्हाई प्रोटीन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन. सो आंसर ए इज करेक्ट हियर. Now question number 221. Which of the following is not required for seed germination? A. Water, B. Air, C. Sunlight, D. Suitable temperature. So friends, जो seed germination के लिए हमें चाहिए water, air, suitable temperature, but they don't require direct sunlight for germination. Why? Because they have already their food nutrition inside their coat, seed coat. उनके पास ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट होता है. दे डोंट रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल. दे डोंट हैव ग्रीन पिगमेंट. उनके पास ग्रीन पिगमेंट भी नहीं होता, तो सनलाइट की उनको ज़रूरत भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती उनको. और इवन इफ़ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट सनलाइट, दैट इज़ समटाइम मे बी हार्मफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. सनलाइट कभी किसी प्लांट के लिए डायरेक्ट सनलाइट is not required, or that may be harmful for the germination process. So excluding sunlight, what else they need? They need water, air, or suitable temperature for the germination. So answer C is correct. Sunlight is not required for seed germination process. Now question number 222. Where is the Botanical Survey of Indian headquartered? A. Lucknow, B. Darjeeling, C. Kolkata, D. Ottakamond. So answer C is correct. जो Botanical Survey of India है, that is a apex research organization that comes in under the Ministry of Environment and Health, and that its headquarter is present in the Kolkata. इसका headquarter जो है Botanical Survey of India का
that is located in Kolkata. Answer C is correct here. Now question number 223. Who among the following was awarded Nobel Prize for path-breaking contribution to develop treatment against Parkinson's disease? A. Arvid Carlson, B. Walter Cohn, C. Robert B. Loughlin, and D. Farid Murad. So answer A is correct. Arvid Carlson, he was the person that won the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2000. And what did he do? He is a neuropharmacologist and he worked on the neurotransmitter dopamine and its effects in Parkinson disease पे इसने काम किया था and dopamine पे रिसर्च की थी and Parkinson disease का पे इसका इफेक्ट देखा था dopamine का and he got the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2000 year. So answer A is correct. Arvid Carlson is the person who got the Nobel Prize for Parkinson disease. Now question number 224. Which of the following foods item is rich source of iron, rich on iron? Option A rice, B apple, C pulses, D orange. So answer B is correct. Apple is a rich source of iron. Apple contains 1.1 milligram of iron per 100 grams of apple. So answer B is correct. Now question number 225. Robert Koch, who discovered cholera germ? A. Robert Koch, B. René Lemneck, C. Dresser, D. Hansen. So friends, Robert Koch is a scientist that discovered the cholera germs, and the cholera germs was, it is a Vibrio bacterium. So Vibrio cholerae is a germ that is discovered by the Robert Koch, and this is a cholera causing germ. So answer A is correct. So friends, thank you all. I am stopping my video here and we will continue our discussion in next questions in our next video. Till then, bye.